इस बारे में बात करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। आपके साथ ही हो रहा है सब। नहीं नहीं, so we were shooting at विश्व मारता रहेगा मैं नहीं मारता। हेलो 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 ओके ऑन अ सीरियस नोट 12 AM को we were shooting, it was a night shoot and हम लोग रात को शूट कर रहे थे एंड ऊंचा बोर्ड का ही सीन था एंड वहाँ पर लाइट्स लगी थी तो अचानक से लाइट बंद चालू होने लगी थी सो वी वर लाइक इट इज वी थॉट इट इज अ पार्ट ऑफ द सीन तो सीन रुक गया था पर हम मतलब दे हैड कट द शॉट बट हम लोग फिर भी खेल रहे थे उसमें बाद में हमको बोला कि नहीं शॉट कट हो चुका है आप लोग मत खेलो एंड देन दे हैड टू फिगर आउट कि ये क्यों हुआ इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द सेटअप और द लाइट आउट सो दैट हैपेंड बट बाद में पता चला वो लाइट दादा ने कुछ बटन प्रिपेयर रख दिया था तो उसकी वजह से हो रहा था फिल्म में मेरे कैरेक्टर का पाँव टूट जाता है और जैसे मैंने फिल्म साइन की मैं गड्ढे में गिर गया और मेरा पाँव टूट गया दिस इज रियल मतलब सो मुझे बहुत ज़्यादा मेथड एक्टिंग के बारे में सोचना नहीं पड़ा इट वाज एंड आई आल्सो सो You got something in your eye, no? या तो मेरे आँख में बम पड़ा so I was the one who was under like lot of trouble from signing to finish Yes, yes. गणेश शर्मा सो आपने नोटिस किया होगा मूवी मेरे बाल बहुत लंबे हैं और अभी नहीं है सो आई काइंड ऑफ गॉट एन ओमेन तो व्हाइल वी वर शूटिंग द सीन मेरे बालों में आग लग गई थी व्हाइल शूटिंग एंड या वन ऑफ द 80s राजीव वाज देयर एंड उसने आके पीछे से वो किया सो इफ यू आर वंडरिंग व्हाई माय हेयर इज शॉर्ट दैट्स व्हाई आई टुक द मैसेज screening in future story. So the screening started and there is a scene where जब exactly calling अनामिका तो अनामिका वाला सीन जैसे ही आया उनका प्रोजेक्टर का बल्ब उड़ गया और they say कि in our history this is first time. Same thing happened. I kept a screening for Z in Sunny Sound. So say with the same scene. Exact when Anamika wala scene, I think it's after 25 minutes and their sound is gone. Like visual was there, sound गया and the guy who operating said कि 25 साल से मैं कर रहा हूँ ये मेरा first experience है ऐसा कि जब ऐसा होगा and Girish ji is here, he was there for the screen. and also adding post to the shoot Shreyas got a heart attack We could have avoided that. Thank you so much, ladies and gentlemen. साथ में कुछ तो है मेरे शूट पर आने के पहले बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे मुझसे कहा गया था कि ये बीमार हो गया था वो बीमार हो गया था श्रेयस भी बीमार हो गया था तो मैं बहुत प्रिकॉशंस के साथ गया स्टीम इनहेलर लेके गया मास्क लेके गया विंटर थी तो जैकेट लेके गया तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ लेकिन फिलहाल आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ ओके कुछ अजीब लगा इसमें पढ़ के स्क्रिप्ट को कुछ पढ़ी नहीं थी स्क्रिप्ट सुनी थी मैंने स्टोरी संगीत जी से सुनकर बहुत अच्छा लगा और मतलब कि मैं इतना सोच नहीं रहा था आई वाज सो एक्साइटेड टू वर्क विद संगीत जी अगेन दैट मैंने उसी वक्त उनसे मतलब एक्साइटेडली बोल दिया कि आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट बट हॉरर फिल्म तो मेरी फेवरेट जॉनर है या मैंने इतनी हॉरर कॉमेडीज की है और शुरुआती दौर में भी कुछ तो की थी जो एक स्लैशर हॉरर थी सो इट्स माय फेवरेट जॉनर मेरे फैमिली का फेवरेट जॉनर माय सिस्टर एंड माइन वी बोथ आर बचपन के मतलब राम से भक्त वी आर बट दिस इज डेफिनेटली वेरी वेरी कंटेम्पररी एंड वेरी स्लिक and very well enacted by all of us including myself so the opportunity was great तो पढ़ी नहीं थी स्क्रिप्ट सुनी थी थैंक यू सर Yes. Can you pass the mic at the back, please? Sure. के अंदर ये रोल में आपका बनारसी फ्लेवर का रोल है इसमें नहीं है उसमें है वो कहानी बनारस की है दिस इज कप कपी में आपका ये रोल इसमें थोड़ा गुजराती डायलेक्ट है मेरा अच्छा तो आप कुछ गुजराती में बोल दो ना एक मेरा तकिया कलाम है इसमें जो आपने शायद गाने में भी सुना होगा टीजर में भी मैंने बोला है भाईला तो हम गुजराती लोग किसी भी ऐसे मेल पर्सन को भाई बनाना चाहते तो हम ऐसे ही बोलते हैं जैसे मैं गाने में इनको बोल रहा हूँ अच्युत भाईला सो ये मेरा एक तकिया कलाम मैंने कह सकते हैं रखा हुआ है एंड
थैंक्स टू हमारे राइटर जो है सौरभ सर, जिन्होंने मुझे ये बहुत बार यूज़ करने दिया, विच वॉज नॉट प्लान. But about talking about the experience, I'm really happy, and I think so. I should say I'm blessed because this is a miracle for me that two films were releasing in the same month, and plus I'm just grateful to Jayesh sir, Sangeet sir, and everyone who brought me on board in this project, and thankful to God who aligned everything on the same month. So yeah. और बुलाना पड़ेगा आपके सवाल के. नहीं, एक्चुअली मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, इसलिए बहुत एक्साइटमेंट हो गई आपको देख के. तो मेरा सवाल ये था कि आपने जब ये मूवी की थी तो कोई भी ऐसा सीन ऐसा था जिसमें आपको थोड़ा स्कैरी फील हुआ? फिल्म की कहानी सुनते वक्त तो बहुत ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ बहुत स्केरी फील हुआ, लेकिन यू मीन शूट करते वक्त? यस. शूट करते वक्त हमारे इतने नाइट शूट थे कि सब दिन, मतलब पूरा शेड्यूल ही बहुत ही स्केरी था मेरे लिए, बिकॉज आई डोंट लाइक नाइट शूट्स. लेकिन इतना मजा आया, इतने अच्छे सीन्स थे, इतने अच्छे लोग थे, and we were so well looked after by Jayesh bhai's team, very very comfortable. तो पता ही नहीं चला कि वो शेड्यूल कहाँ चला गया. वो तो ट्रेलर देखकर यहाँ पर मुझे अपने आप को देखकर बहुत डर लगता है. जब भी मैं डबिंग कर रहा था तो मुझे अपने आप को देखकर बहुत डर लगने लगा. क्यों, मैं ये नहीं बोलूँगा बात. क्यों, आपको फिल्म देखनी वो पड़ी. फिल्म देखकर Sangeet Sivan sir, when you were doing Kya Phule Hum also, and as you said, 20 saal baad, he was a creative genius, and I have seen him, a very down to earth person, but he was full of creative energy. Can you share some anecdotes, some memories of working with Sangeet sir? I am flooded with memories. और आज ही मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि इट्स अ कोइंसिडेंस कि May 6th 2005 को क्या कूल लगी थी फर्स्ट पार्ट, and it's exactly 20 years later now. It's I think it's all in God's hand. The timing of things is all in God's hand, and I feel very very मतलब कि I feel lucky that I got a chance to work with him. Again, that is my saubhagya, and again that's in God's hands. It's not in our hands. We can only do our best, and the right projects come to you at the right time, and this is definitely a right project for me. So a lot of anecdotes. We've done the first trailer screening of Kya Cool also in this property, and it was called something else earlier. It was called Fun Republic earlier. Now it's Cinepolis, but we've done it here. And बाजू में हमारा ऑफिस है बालाजी का, तो वहाँ कितना बैठा करते थे हम, और कितनी यादें हैं. And marketing, I think that set trends where marketing is concerned also. That movie, I think we tie-ups हुए थे, पहली बार हम serials में गए थे. So lots and lots of memories with the entire team, and just feel very very emotional right now, and it's again in God's hands today that we are able to see such a wonderful movie coming out so soon on the 23rd of May. A very good month. It's a very good period also, and very lucky for me. I've had, मुझे कुछ कहना है, 25th of May, shoot out at Lokhandwala 25th of May, and Kya Cool Hai 6th of May. So May is a lucky month for me. And the scene moment that you enjoyed the most? I think most of us were shooting for about say 40-45 days, and we were shooting in this place called Faridabad. So first of all, outdoor shoots जो होती है वो सबसे ज़्यादा fun time होता है, because as a team आप एक साथ मिलते हो, एक साथ खाते हो, पीते हो, काम करते हो, so you end up becoming really good friends with everybody. So I feel instead of just saying one particular moment, I'd say that the whole shoot was the best experience. जब भी हमें थोड़ा टाइम मिलता था हम दिल्ली निकल जाते थे, दिल्ली में जाके शॉपिंग करके वापस आ जाते थे. Then शादी में गए थे. हमने I don't know ये मतलब बोलना चाहिए. You can just get arrested later. नहीं तो नहीं. But basically बहुत मजा किया है. Night shoots में I think Tushar sir doesn't like it, but I love night shoots because it's so much fun, and ठंडी थी वहाँ पे, so we used to all sit, and वहाँ पे वो bonfire type होता था, सब आजू बाजू बैठ के we used to sing songs. I think there was a cricket match going on that time. World Cup was going on. So in between the takes हम सब बैठते थे कि सबके मतलब 5 लोगों के फोन लगे हुए हैं, and सब देख रहे हैं क्या हुआ, कोहली आउट हुआ, रोहित शर्मा आउट हुआ. So I think all in all, I think it was the best experience so far. What do you bring to your character that brings you stand out? Honestly, I think Madhu's character is going to be very close to my heart because she was one of the first characters where I felt
zero obligation to look good, to have my hair done right, to say the right dialogue. Sangeet sir gave me so much freedom, and I couldn't be more thankful for it. You know, Zero obligation to say the right dialogue. no, I mean to look good in any way. Like मैं छोले भटूरे खा रही थी, मैं कुछ नहीं कर रही थी, and I would go on set and he would allow me to improvise a lot and bring out my own voice. So like जैसे कब कभी की चीख होती है, that's my voice that you don't think is mine, but it's mine. But yeah, I think Madhu definitely gave me the ability to just let a lot of walls down in front of a camera, जो बहुत actors और actresses के होते हैं. Yeah. उस दिन से संगीत जी को फीवर रहता था, बट लास्ट डे ऑफ डबिंग वो घर गए, देन ही एडमिटेड. सो ऑलमोस्ट ऑल द क्रिएटिव कॉल्स वाज डन, लाइक एडिट हमारा लॉक था, डबिंग हो गया था. सो आफ्टर दैट जस्ट वॉट एवर विथ डन बाय द एसोसिएट एंड संगीत जी सन, जो उनका कॉल था उसको जस्ट कंप्लीट किया. तो फिल्म ऑलमोस्ट कंप्लीट थी हमारी. आप जब एक ऐसी फैमिली से होते हो जहां आपकी फैमिली में काफ़ी बड़े बड़े स्टार हो, जितेंद्र सर की बात करें, एकता मैम की बात करें, ऐसे लोगों से जब आपका नाम जुड़ता हो, आपकी किरदार को भी पहले काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला. पर एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, एज अ स्टार किड आपके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है ऑडियंस की तरफ से? ऑडियंस की तरफ से तो कभी नहीं रहता है. ऑडियंस आई फील दे लाइक अ मूवी फॉर व्हाट द मूवी इज. दे लाइक an actor or an actress for the kind of work that we put in, our hard work, our talent, screen presence, all these things. And they don't compare or judge enough. I think, of course, पहली फिल्म के पहले थोड़े expectations होते हैं, but thereafter you're on your own, and thereafter the work has to do the talking. And I would say the pressure is more on from the media side, of course, because when we're coming into the film world, then they build a lot of expectations and then we're judged on that barometer. But एक बार आप पर्दे के सामने आ गए, ऑडियंस के सामने, फिर ऑडियंस की ही चलती है. फिर ऑडियंस डिसाइड करती है कि आपको क्या 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 उनका रिस्पॉन्स है, क्या उनका वर्डिक्ट है. And then it's also about how you conduct yourself, how you choose the right projects, where you take your career, your attitude towards your work, and then you're on your own, more or less on your own for sure. और सेकंड थिंग, इस लव एक्शन ड्रामा वाले जॉनरा में जिस तरह का माहौल है, उसमें कभी के लिए आपको हाँ कहने के लिए क्या सबसे ज़्यादा मजबूर किया? माहौल तो बदलते ही रहते हैं. मतलब माहौल का किसी का कोई कंट्रोल नहीं, किस माहौल क्या होने वाला है जब आपकी फिल्म लगेगी. और आई थिंक हॉरर कॉमेडी के लिए लोग तो हमेशा ही रेडी रहते हैं. इंडिया लव्स टू गेट स्केयर्ड एंड इंडिया लव्स टू गेट एंटरटेन्ड एंड लाफ. सो आई थिंक इट्स द बेस्ट जॉनर. लेकिन इस फिल्म की एक अलग बात यह है कि सब कहते हैं अपनी फिल्म के बारे में, लेकिन ये जेन्युइनली आप ट्रेलर से ही देख सकते हैं कि द कैरेक्टर्स आर वेरी रियल. द लुक ऑफ द फिल्म इज वेरी रियल. दे आर फ्रॉम दिस लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड. दीज बॉयज, including myself, we all part of this very real and very grungy kind of an atmosphere. And in that sense, it's more horror film, which also happens to be a comedy. It's not an intentional horror comedy like we've seen of late कि हाँ ये genre तो horror comedy. इस फिल्म को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि situationally comedy हो जाती है, लेकिन by and large the story is about the Ouija board, which is quite scary. So that's why horror comedy. Start and we'll go down the line. I think for me, I was thinking about this very recently, and Sangeet sir reminded me of a little mouse on set. I would always look back at the monitor. I have this habit after I do any take, I look straight at the director, and every time I looked at him, I would just see him like sitting behind the monitor with his little giggle. He was one of the sweetest people I knew. Never raised his voice, at least not in front of me. And he would call everybody Mole. I don't know if I'm pronouncing that correctly. Mole. I did it correctly. But it was very endearing, and I think he was a huge part of why this cast feels like such a family. Like even today when we came, there was so much heart here. We all felt so happy seeing each other. So I know it's heartbreaking that he's not a part of this right now, but this film has so much of him in it. I think I'll add one or two more things to what Sonia said. I think for all of us, the stage begins from there. Sangeet sir is with us, and just like this, he has been there like a constant thread throughout the movie.
he was the hardest worker in the room. Never have I ever seen him sitting on set. मैं आपको बताना चाहता हूँ ये. Throughout the shoot, he wasn't feeling well. The AQI was around 800 to 1000 on most days, right? Diwali time and everything. He was not feeling well. Hardest worker in the room. Always standing, always rehearsing with us. मुझे एक बात याद है उनकी कि scene होने से पहले हमेशा with the script he would rehearse with all of us, and that's where all the camaraderie and that's all where the comic timing has come in. So I think those rehearsals and that leeway जो उन्होंने हमको as actors दिया उस समय करने का या improvise करने का, that I think I'll always remember it. हो जाता था गद्दा तो हमारा वही लगा पड़ा था तो आई यूज्ड टू स्लीप सो आई स्टिल रिमेंबर मैं सो गया था एंड फटाफट आधे घंटे में वापस बुला लिया गया था शूट हुआ फिर मैं हमको टाइम मिला ब्रेक हुआ फिर आई वेंट टू द रूम एंड आई ओपन माय फोन एंड आई सॉ संगीत सर सेंट मी अ लॉट ऑफ फोटोज ऑफ मी स्लीपिंग इन डिफरेंट पोजीशंस एंड यू नो ही रोट अ वेरी स्वीट मैसेज कम बैक नंकू कि शॉट रेडी है कम बैक नंकू so that was one of the sweetest memories कि मतलब even while he was working on the other shots he had this thing कि इसका थोड़ा you know funky position में सो रहा है तो फोटो निकाल तो इसी को भेजता हूँ and you know that cute innocence वो fun कि हर family की जैसा atmosphere create कर दिया था सर ने and also I would like to say one more thing we are all talking about संगीत sir but like we say कि एक इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है I think I really want you all guys to give a huge round of applause to Sangeet sir's wife. Because I'll tell you why, not only right now but even during the shoot of the film, morning अगर 5 AM का भी call time होगा और रात को 10 PM 11 PM का भी backup time होगा, she was always there with him, right beside एक chair रहता था, that's for her only. And I think so we should all give her the equal credit and not only her, his sister Sajna ma'am, and even I am getting emotional and so yeah, I mean I think that it is not only teamwork but it is also the whole family work. Shantanu sir and everyone who was so supportive of him and I think ये उनकी emotion है जिसकी वजह से ये फिल्म इतनी अच्छी बनी है. आप एक एक सीन देखोगे आपको पता चलेगा and I feel संगीत सर यहाँ पर भी है and फिल्म के अंदर तो नजर आएंगे ही क्योंकि उनके जो quirks है जो you know one liners है उनके बहुत वो मुझे आके बोलते थे कि नंकू इसको ना ऐसे कर सकते हैं and then I used to think हाँ यार ये मतलब he has this you know command over comedy which I think जो बहुत कम होता है in spontaneity. So I think so that's how I remember Sangeet sir, spontaneous. Yeah, we all really miss him and I'm hoping that he's there with us and that the film becomes a massive success, not for any of us but for him. So thank you. I saw him before the day he passed away and किसी आदमी को आप शायद मीटिंग ब्रीफ इंटरेक्शन में शॉट के पहले बहुत कम जान पाते हो कि वो कितना बड़ा आर्टिस्ट है. आई थिंक उनके जाने के बाद से आई थिंक आई बीन टच विद द राइटर एंड जयेश सर एंड डिस्कवरिंग सच अ वंडरफुल आर्टिस्ट ही हैज बीन. I mean, see the kind of work he has done in vernacular and regional cinema. Yodha, please go and watch Yodha. One of the finest actor, Mohanlal, you know, arrived in the scene because of that. And it was like a film school, literally. No matter I am from certain drama school and I pose a superiority over I am certain kind of actor. But to work with him, you got to know the skill and trade of cinema making. It's a genius that has passed away. And I think the seed of creativity he has sown in his family, I think you will see. More power to you. Hello guys, so this is my first ever Hindi film and Sangeet sir is the sole reason why I'm on the stage because initially this character was a South Indian character who was Malayali but then my Malayalam is also bad, Hindi is also bad. So because of me, he believed some talent that I have. He made this character a Tamilian who speaks the worst Hindi that you will hear. It's because of him, Saurav, Shantanu, Sid, that I managed to tell my lines. Till the end of the schedule, till the last day I met him, he used to call me by my character's name. Whenever I wanted to tell him, Abhishek sir, Ravin? So he was the first to arrive on set, last to leave the set. No matter how bad the pollution was, climate was, weather was, no reasons. He was always there. He was
he might have been serious with the direction team, I don't know, but never once to all of us he showed the side of anger. He made us all look old. His energy was very, contagious on set. So I really hope, Sangeet sir, wherever you are, we make you proud. I hope you like the final output. Join us on 23rd, we'll watch it together. Yeah. Pretty much the same feelings I share, and really it feels like he's around us. It doesn't feel like he's not around us, and kind of person he was extremely warm, very nonchalant in his behavior. Never would he come across as a person who's not accessible. Anybody would walk up to him, talk to him, and he had a very strange kind of humor. And his dry humor, and his one-liners were amazing. He would say something in passing, and then won't repeat it, and then say something somewhere else. So, and he would just turn a serious situation into a very comical, funny situation. And the best thing was about him, and I think because he as a person was so real, in lack of a better word, that then it was bound to happen that the actors and everybody on set was just like family. Luckily, we were shooting in our house most of the time, and we had the people whose house it was, they were also around. They also became part of the set. Haryanvi people with a South Indian director, and Tau, ठीक है, मोले Tau. So it was all great fun, and what a guy. I mean, quite honestly, rarely you find people who are full of matter, but they don't show it at all. And he was one of those rare people, extremely simple. और हिंदी में तो उनका घड़ा भरा हुआ था, it wasn't an empty vessel who makes noise. He was a very special person, and I'm very sad that he's not around. It's an untimely demise, but his work is here with us and will all forever and ever be. So yeah, wonderful memories with sir. He was, as a human, gem, as a creative person, to be honest, creative genius, and he only talk is film. No any other talk. So that was he, and as a human, I really missed, because during, it was privilege to work with him like one and a half year during the making of this film. So